everyone, this is Mahima and welcome back to my channel Nine. So for today, I'm going to starting off with the wedding makeup series. You guys wanted me to start wedding makeup series, and after thinking it for like 100 times, I finally decided to start and to go for it. This would be the first time doing such series. So पहले ही सॉरी अगर मैं कुछ भी चीज़ गलत करूँ या आपको पसंद नहीं आए. सो लॉकडाउन है तो मैं बाहर तो जा नहीं सकती, सो मैं घर पे ही हर चीज़ समवट करूँगी अरेंज. सो या दिस इज़ द फर्स्ट लुक विच आई क्रिएटेड. सो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल से. आप सोच रहे होंगे दिस शुड बी द लास्ट वन, मैं इससे पहले क्यों स्टार्ट कर रही हूँ. I wanted to start with the wedding makeup series but with the guest makeup because the guest makeup is a look which all of you can wear, so it's very simple, achievable. Yeah, if you're interested in this video then please keep on watching, but before that don't forget to like, share and comment and also subscribe to my channel, hit that bell icon. So now without further ado, let's get started with the video. So I'm going to begin with some skincare. I'm going to use this DIY toner, and please excuse the situation, it's so hot right now. So I'm going to take this Pond's light moisturizer. First of all, as you can see, I've applied the moisturizer. Next, I'm going to take this Wet n Wild Mega Glow highlighter, and I'm going to apply it all over my face. Get that glowy skin, and I'm going to blend it using my hands. You can also take a blender, but I'm just taking my hands. Next for foundation, I'm gonna take my current favorite foundation. So it's a L'Oreal Infallible foundation. You can see the redness, but I won't be concealing it because it's not that dark right now. So I'm just gonna apply it all over my face. Using a matte foundation, like a demi matte foundation, and we have applied liquid highlighter. So हमारी स्किन एक्स्ट्रा मैट नहीं लगेगी और काफ़ी हद तक डूई लगेगी. So I will be going for like a bronze eyes because that I feel looks very pretty for like a guest makeup look. So you can clearly see it looks very much blended now and it still looks dewy. So for concealer, I'm using this Insight 2X Cover Master Concealer. This is a very decent concealer and I'm applying it onto my under eyes, bridge of my nose, sides of my mouth. I'm going to blend it using my brush. So now you can see my face looks fine. Now I'm going to take this Blue Heaven Face Glow powder and I'm going to bake or set my under eyes. बेसिकली आई एम सेटिंग ऑल द एरिया जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया है. मैं इस एरिया में लगाऊंगी जहाँ मेरी जॉ लाइन है, जॉ लाइन के ठीक नीचे. सो आप देख सकते हैं इससे मेरी चीक अपलिफ्टेड लग रही है. यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा लगा के इसे बेक कर लेंगे. So if you're a wedding guest, go for a bronzer, that way it looks more natural. So I'm using this LA Color Shimmer Bronzer. बहुत lightly अपने face को bronze करूँगी. So I'm gonna tap off all the excess, थोड़ा सा forehead पे इस एरिया को. Next हम वापस से tap करके सिर्फ अपने इस एरिया को. तो ये रेडिश ज़्यादा है, सो बी केयरफुल, ज़्यादा नहीं प्रोडक्ट अप्लाई करें. और हम हल्का सा अपने नोज़ की साइड पे, तो मैं बहुत लाइटली से अप्लाई कर रही हूँ. So for my blush, I'm gonna take this palette. This is the Kiss Beauty All About Lips palette. I love this palette for my blush. I'm gonna take these two shades for my blush. So now I'm going to move to my brows, and for that I'm using this Wet n Wild Retractable pencil.
हम थोड़ा लाइटली इसे अप्लाई करेंगे। तो ज़्यादा थिक या ज़्यादा थिन नहीं करेंगे, जो नेचुरल शेप है बस उसी को फिल इन करेंगे। And with this pencil is finished. I really love that pencil. That pencil is very good. For my eyes, I'm going to use this Wet n Wild palette, Rose in the Air palette. So first, I'm going to take this shade as my transition shade. So आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से अपने पूरे क्रीज के अबव इसे अप्लाई करा है। Now you all know कि क्रीज कहाँ पर है। क्रीज ये एरिया है। नेक्स्ट आई एम गोना टेक दिस शेड। मैं क्रीज को थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूंगी। और इसी को अपने आउटर कॉर्नर पर रखूंगी। So I need a very bronze shade. So I'm gonna take this palette from Makeup Revolution. I'm gonna take this shade, very nice bronzy shade. So I'm gonna apply it all over my crease. And now I'm gonna take this Glam 21 liquid eyeshadow in 01 and I'm gonna apply it on top. Now I'm gonna take the same darker brown shade और मैं अपने outer corners को अच्छे से darken करूँगी और blend करूँगी. Now I'm gonna take the same shadow और मैं इसे अपने lower waterline पे भी लगाऊंगी. I didn't want it to go even this much heavy, but I can't help it. Now I'm gonna take this white kajal pencil from Belle Voste. So इससे मेरी eyes थोड़ी white लगेगी. और अगर आपकी eyes बड़ी है तो आप black apply करें. Also just gonna tight line my waterline. Now I'm gonna apply a very thin liner only onto my outer corners. I just applied a very thin all over my eyes. So now I'm gonna wear the lashes. So for lashes, I'm going for these lashes. So this is like a mink lashes. So these are from Beauty Soak. So I'm just gonna apply it and we'll be back. You can see I've applied this blue color onto my waterline. बाकी थोड़ा मेरे outfit blue है, so giving a touch of blue. So that's why I'm gonna apply some mascara. This Maybelline Total Temptation mascara. So that's pretty much it. I know my eyes look really dramatic right now. I really wanted to go for a very subtle one, but it's me. I think it still looks very much wearable because this kind of makeup look is not something that's extra dramatic. क्योंकि ये बहुत बेसिक कलर्स है. एक मैंने ब्राउन एंड ब्राउन से कलर प्ले किया है. सो मैं जैसे अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ बहुत कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी हाईलाइटिंग लिक्विड हाईलाइटर यूज़ किया है. सो आई एम यूजिंग माई मेकअप रेवोल्यूशन प्रो इल्यूमिनेट. So now my face looks much better. To apply something for my lips, just for the suit and the earrings. So this is the outfit, very simple. So now for my lips, I'm going to use this NYB lipstick. You can see the lipstick looks quite dark, so I'm going to lighten it with the SFR 109 lipstick. And this is the lip shade. हेयर के लिए सिर्फ इसे ओपन किया और मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट किया है. मैंने प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं किया, बस हल्का सा. यू कैन ऑलवेज कर्ल योर हेयर और स्ट्रेट योर हेयर, बट आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक विथ स्ट्रेट हेयर. सो अगर आप चाहे आप कर्ल भी कर सकते हैं. नाउ जस्ट गोना स्प्रे सम सेटिंग स्प्रे टू मेक श्योर कि मेकअप पूरा दिन स्टे करे. साइड आपके हेयर पीछे की तरफ है, तो द साइड वेयर योर हेयर आर फॉलिंग बैकवर्ड्स, तो आप वहाँ पर इसे आगे रखें. दिस इज लाइक अ वेरी सिंपल सूट.
plain shirt है and दुपट्टे पे थोड़ा work है and the plazos are also very simple. So this finishes this makeup tutorial. This is like my first addition to the wedding makeup series. Yeah, that's all for today. I hope you like this video, and if you like these kind of videos, do let me know in the comment section below, and for more such videos, stay tuned. Bye.